Good evening. Today we will discuss about a new concept, that is the simple past. The simple past tense is used to describe complete actions in the past. प्रकृतरे आमे एतले सिंपल पास्ट टेंस व्यवहार करचंती साधारणतः यह आमर अतीत रे कौनसी कार्य कंप्लीट होते से क्षेत्र में आम सिंपल पास्ट फॉर्म को व्यवहार करवा। आर बेसिक स्ट्रक्चर कौन अच्छी आम जाना जे सिंपल पास्ट फॉर्म व्यवहार कर कौन बेसिक स्ट्रक्चर अच्छी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस. नाउ यू सी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस द स्ट्रक्चर वुड बी subject plus verb in simple past form plus other word class. It is optional. We can take example: I walked to school, the birds flew. I subject, walked, verb plus ed, simple past. Next, the birds flew, the birds subject plus fly, past form flew, the birds flew. In negative sentence, the structure would be subject plus did not plus verb in the base form plus object or other word class. एथिरे हमें सब्जेक्ट नबा, तापरे डिड नॉट लिखिबा, verb रो बेस फॉर्म रहिबो verb 1, यार आउ पास्ट टेंस करिबा नाही, तापरे हमें ऑब्जेक्ट लिखिबा किबा अलगा वर्ड क्लास लिखि परिबा. एग्जांपल नबा, आई डिड नॉट वॉक टू स्कूल. नेक्स्ट नंबर हला द बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई. आमे द बर्ड्स डिड नॉट फ्लू लिखिबा नाही, डिड नॉट लिखिकरी फ्लू लिखिबा नाही. डिड नॉट जदि व्यवहार करूचंती तापरे आमे v1 आम लिखा फ्लाई. डिड नॉट यदि व्यवहार कले आ वाक्ड लिखा ना, डिड नॉट वाक, आई डिड नॉट वाक. नेक्स्ट इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड क्लास. फर्स्ट आम सेंटेंस बिगिनिंग रे डिड व्यवहार करिबा, तापर सब्जेक्ट लिखिबा, तापर वर्ब लिखिबा, वर्बटा बेस फॉर्म रे रहइबो, v1 फॉर्म रे रहइबो, तापर अलगा जदी हमर किछि अदर वर्ड क्लास अछि ताको हम लिखिबा. शेषरे हमें क्वेश्चन मार्क दबा. एग्जांपल कोन होबो, डिड आई वॉक टू स्कूल. डिड आई वॉक, डिड रे व्यवहार करा गला, आई सब्जेक्ट रहिला, तापर वॉक हमर v1 एटा वॉकड हबो नाही, तापर टू स्कूल लिखि प्रश्नवाचन देले. Similarly, did the birds fly? Note देखिबा, the simple past form of regular verb is usually formed by adding ed to the base form of the verb. यदि regular verb अच्छी साधारणतः आमे ताको past form रे करिया हेले सेतरे ed जोग करा जाय थाए. जेमति कि आमे एग्जांपल नबा, walk walked, dance danced, walk walked ed जोड़ा हला, dance danced ed जोड़ा हला. एगुड़ा हूँ आमर रेगुलर वर्ब, बट इन इरेगुलर वर्ब्स दे हैव डिफरेंट फॉर्म्स इन सिंपल पास्ट व्हिच नीड टू बी मेमोराइज्ड. ताको हम मन रखिया को पड़िबो. जब इरेगुलर फॉर्म आसीबो ताको हम पास्ट फॉर्म करबा ततबे एहा भिन्न भिन्न प्रकार रे हेथाय. लिखिबा गो वेंट, फाइंड फाउंड, गो वेंट. गोर गोड हे छि, फाइंड रो फाइंडेड है लगी नहीं. ये सब वर्ब गुडी होची हमरो इरेगुलर वर्ब. नाउ यू मार्क सम रूल्स फॉर यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस. केतको नियम आमे देखिबा जहा कि आमे सिंपल पास्ट फॉर्म पई व्यवहार करिबा. रूल नंबर 1, यूज द सिंपल पास्ट टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. अतीत रे कंप्लीट हेथिबा कार्य पई, संपूर्ण होइथिबा कार्य पई आमे सिंपल पास्ट व्यवहार करिबा. जेपरि एग्जांपल नबा, आई वेंट
to school yesterday. Number 2, we use the simple past to describe habits or routines in the past. ଅତୀତରେ କୌଣସି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା କୌଣସି ରୁଟିନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ସେପରି ବୁଝାଇଲେ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଇ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଇଂଲିଶ ଏଭ୍ରିଡେ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆଇ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଇଂଲିଶ ଏଭ୍ରିଡେ। ନମ୍ବର 3, use the simple past to describe actions that started and finished at a specific time in the past. ଅତୀତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ବୁଝାଇଲେ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଆଇ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଫର୍ 3 hours ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ଆଇ ଷ୍ଟଡିଡ୍ ଫର୍ 3 hours ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ କହିଲେ ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲି। We use the simple past to describe actions that happened at a specific time in the past. 3 ରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ actions that started and finished at a specific time in the past. ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 4 ରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ଆକ୍ସନଟି ଅତୀତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। I arrived at 5 o'clock. Number 5, use the simple past to describe actions that happened before another action in the past. ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଅତୀତରେ ଘଟିଥିଲା। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା, I ate breakfast before I went to school. ଏଠି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲି। ତାହେଲେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କଲି ତାପରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି। I ate breakfast before I went to school. We use the simple past to describe actions that were interrupted by another action. Simply past को हम व्यवहार करिबा जहाँकि अन्य एक एक्शन अन्य एक कार्य द्वारा ताहा इंटरप्टेड होता है। इंटरप्टेड माने ताहा प्रतिबंधक होता है। केमती आम एग्जांपल देखिबा, आई वाज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग। मु पढ़ुथला बेले फोन टी बाजिला। फोन जो बाजिला ता द्वारा पाठपढ़ाटा इंटरप्ट है, बाधा पाइला। सो गोटे घटना घटुला बेले एटी आउ गोटे घटना घटला। घटुला बेले जोटी होची सेठी आमे पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म व्यवहार करछंती। आई वाज स्टडिंग लिखिछंती। तापरे गोटे घटना घटिला सेठी आमे सिंपली पास्ट व्यवहार करछंती, जोटा कि लिखा हिची व्हेन द फोन रैंग। गोटे घटना चालुथला बेले आउ गोटे घटना घटिला। एपरि बुझाइले आमे चालुथला बेले घटनाटी पाई पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म बसेबा लिखिबा एवं आमे जो घटनाटी तापर घटिला सेठी आमे सिंपल पास्ट फॉर्म व्यवहार करिबा। नेक्स्ट देखिबा, वी यूज द सिंपल पास्ट टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपेंड इन ए सीक्वेंस। सिंपल पास्ट को व्यवहार करछंती कोन सूचना देबा पई ना एक्शंस दैट हैपेंड इन ए सीक्वेंस। सीक्वेंस माने क्रम अनुसार कार्य गुड़िक हो चली। देखिए आम एग्जांपल, आई वोक अप मु उठिली, तापरे गट ड्रेस्ड ड्रेस पिंधिली, तापरे क्रम कौन है एंड वेंट टू स्कूल, तापरे स्कूल को गली। एटी तीनोटी कार्य होइछि। आई वोक अप फर्स्ट, देन है गट ड्रेस्ड, थर्डली आई वेंट टू स्कूल। क्रम अनुसार घटना घटिला, दैट हैपेंड इन ए सीक्वेंस। ए क्षेत्र में आम सिंपल पास्ट फॉर्म व्यवहार कले। इन ओडिया द सिंपल पास्ट इज फॉर्मड यूजिंग द वर्ब्स पास्ट टेंस फॉर्म व्हिच यूजुअली एंड्स इन ली ला लू। ओडिया रे आम जो सिंपल पास्ट फॉर्म को व्यवहार करछंती सेतेबेले वाक्यर शेष रे आमे कोन करछंती ली ला लू, मु खाइली से खाइला, आमे माने खाइलु, एभली ली ला लू रो उच्चारण आसुछि। मु पढ़िली आई स्टडीड, ली लिखा है। मु गली, मु खाइली, मु पढ़िली, सब ली रे अछि एठी। मु गली आई वेंट, मु खाइली आई एट, मु पढ़िली आई रेड। एगुड़िक हूँ आमर सिंपल पास्ट फॉर्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।